देखिए, if we are talking about a halide ion, अगर हम halide ion की बात कर रहे हैं बेटा, so we are talking about chloride, bromide and iodide. ठीक है? And whenever chloride react, it always form chlorine, है ना? Cl negative. Whenever Cl negative react, क्या form करेगा? Cl2. And this is basically a oxidation reaction. So all halides ion itself getting oxidized. So can I say that all halides ion basically are the reducing agent? Agreed? All halides ion are the reducing agent. Going down the group, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती है तो हैलाइड आयन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी. कैन आई से दैट गोइंग डाउन द ग्रुप reducing power increases, reducing power increases. So if I say that out of chloride, bromide and iodide, the strongest reducing agent is basically iodide. This is the strongest reducing agent. बहुत शुक्रिया. सही है. So halide, this is the strongest reducing agent, and the weakest is chloride. ये बात रहता है. Going down the group, the reactivity of halogen increases, but the reactivity of halogen decreases, but the reactivity of halide ion increases. ठीक है. So अगर आपसे chloride, bromide और iodide की बात हो रही है, all these are basically the reducing agent. Among the list, the iodide ion is basically the strongest reducing agent. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. On the basis of this, आपके पास ये रिएक्शन आगे फॉलो करेगा. अब एक और बात मुझे बताइए पहले. आई एम जस्ट मेकिंग अ थीम ऑफ दिस रिएक्शन. इफ आई आस्क यू कि you have H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसके साथ ये रिएक्शन हो रहा है. If I ask you what is the oxidation state of sulfur in H2SO4? Oxidation state of sulfur. रिमाइंड करवा दूं कैसे निकालते हैं. So if you have H2SO4, सही है, हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए बेटा? सल्फर की. हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एंड ऑक्सीजन ऑलवेज -2. तो हम कहेंगे 2 टाइम्स ऑफ +1 बिकॉज ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो ये हो जाएगा सल्फर -6 इज इक्वल्स टू 0. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा प्लस. So oxidation state of sulfur in sulfuric acid is +6. ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में हमने इसको कई बार कैलकुलेट किया. ठीक है, क्लियर. नाउ a very simple question. If I ask you the oxidation state of sulfur in SO2, what should be the oxidation state of sulfur in SO2? +4. ठीक है. दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2. क्योंकि ऑक्सीजन में -2 होता है. यू हैव 2 ऑक्सीजन तो -4 हो गया और सल्फर पे आ जाएगा +4. दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2. नाउ इफ आई आस्क यू one more thing, what is the oxidation state of sulfur in just S, which is in a solid form? So the oxidation state of sulfur is 0. Good. One more last one. What is the oxidation state of sulfur in H2S? Hydrogen is always +1. Hydrogen is only -1 with metal hydride. Hydrogen is always +1. तो यहां कितनी आ रही है? So oxidation state of sulfur is -2 here. ठीक है, क्लियर. अब जरा इन चारों को गौर से देखिए. Can I say that these are basically the reduced form of sulfur? Yani, if you have sulfur in a +6 oxidation state in a sulfuric acid, अगर उसने reduce होना है तो किस फॉर्म में जाएगा? SO2 में. ठीक है. If it is reacting with a
रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। और अगर कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है तो सल्फर में भी चला जाएगा और फिर H2S में भी चला जाएगा। कीप इन माइंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलाइड आयन। सबसे वीकेस्ट कौन है? क्लोराइड। उससे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? ब्रोमाइड। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? आयोडाइड। सो बेसिकली व्हेन दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस with chloride, no redox reaction takes place। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता बिकॉज क्लोराइड इज अ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक ही रिएक्शन होगा आपके पास। लेकिन अगर ये रिएक्शन ब्रोमाइड के साथ होगा तो आपके पास फर्दर आगे जाके एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं विद Cl नेगेटिव आयन। किसका रिएक्शन होगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड का। So the main basic reaction is same। You have, let's suppose you have chloride present as NaCl। ठीक है, आपने NaCl aqueous और NaCl solid whatever it is add किया into a sulfuric acid which is H2SO4 aqueous। Make sure that this is sulfuric acid which is a concentrated sulfuric acid। आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट aqueous plus HCl plus HCl। ठीक है, ये रिएक्शन हर जगह सेम होगा। अगर NaBr लोगे तो HBr बनेगा, अगर NaI लोगे तो HI मिलेगा। ठीक है, क्लियर? There is an observation related to this reaction, and observation is only one observation, which is the misty fumes of HCl। ठीक है बेटा, देखें ये रिएक्शन जल्दी से देखिए, नोट करके हम एक बात लिखेंगे यहां पर। as Cl negative is a weaker reducing agent, so no further reaction will take place। ठीक है बेटा, HCl नेगेटिव इज अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, तो कोई फर्दर रिएक्शंस आपके पास नहीं होगा। There's only one observation for this reaction which is the misty fumes of HCl। ठीक है, यहां ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा and no further reaction, but the reaction will continue and there is a redox reaction takes place when there is a reaction taking place with Br negative ion, ब्रोमाइड आयन के साथ जब आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा। लेट्स फर्स्ट रिएक्शन इज एग्जैक्टली द सेम। NaCl की जगह यू राइट NaBr, सॉलिड फॉर्म में ही ले लेते हैं, रिएक्टिंग विद H2SO4 aqueous forming NaHSO4 plus HBr, and this HBr is a gas as well। ठीक है, वहां HCl मिल रहा था, यहां पर you're getting HBr। क्लियर? यहां नोट करके हम ये बात लिखेंगे एज Br नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, it further reacts with H2SO4
and reduce it to sulfur dioxide gas. ठीक है? So Br negative is a stronger reducing agent. That's why you have a furthermore reaction takes place. HBr जो आपके पास बना है गैस फॉर्म में, sorry, it's not negative. It further react with H2SO4 aqueous, forming Br2, and this Br2 is in a gas form plus sulfur dioxide gas plus H2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आएंगी। ये जो Br2 आपके पास होता है बेटा, दिस Br2 इज अ रेडिश ब्राउन गैस। SO2 is basically a acidic gas. तो आपके पास जो मिली जुली ऑब्जर्वेशन आ रही हैं वो सारी की सारी ये आई। ठीक है, क्लोराइड के केस में रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व नहीं हुई थी। इन केस ऑफ a bromide you have a reddish brown gas. Acidic gas which is the sulfur dioxide is produced. अब इस क्वेश्चन को they can ask this question in so many different ways, लेकिन नॉर्मली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन ही पूछा जाता है। ठीक है, सो इफ यू हैव अ क्लोराइड आयन प्रेजेंट रिएक्टिंग विद concentrated sulfuric acid, only misty fumes are produced। ठीक है, if you have a bromide ion reacting with concentrated sulfuric acid, then you have a reddish brown gas produced as well। ठीक है, सारे रिएक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ फर्दर। हाँ, नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, ये सारे एक साथ ही हो रहे होते हैं। ठीक है, यानी जो HBr बनता है वो HBr फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता रहता है, एंड यू हैव ब्रोमीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। द फाइनल प्रोडक्ट आर बेसिकली ब्रोमीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, NaHSO4। ठीक है, वो दो ऊपर मिला, ब्रोमीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नाउ द लास्ट वन इज विद iodide ion, I negative ion, which is the iodide ion। इसके बारे में बात याद रखिएगा कि I negative is the strongest reducing agent। It is the strongest reducing agent। Pella reaction is going to be the same reaction। You have NaI, sodium iodide, solid, reacting with sulfuric acid, which is H2SO4, forming sodium hydrogen sulfate and HSO4, aqueous plus हाइड्रोजन आयोडाइड गैस। ठीक है, बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है। HCl में HCl, क्लोराइड आयन में इट्स HCl, ब्रोमाइड आयन में HBr और आयोडाइड में HI। अब यहां पर गोइंग टू सेम नोट एज I negative is a stronger reducing agent, so it further reacts with H2SO4 and reduce it to sulfur dioxide, सल्फर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यानी लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचाएगा, एंड यूल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट इन दिस केस। सो फर्दर यू हैव 3 रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। सबसे पहला रिएक्शन है HI, which is in a gas form, reacting with H2SO4
एग्जैक्टली द सेम एज ब्रोमाइड। आयोडीन मिल रहा है आपके पास इन अ वेपर फॉर्म विच इज अ पर्पल वेपर, प्लस यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है यार, 2 लगा दीजिए, सॉरी प्लेस अ 2 हियर। ये जो ब्रोमाइड वाली इक्वेशन है इसमें भी 2 लगाइए, ठीक है, और यहां भी 2 लगाइए, 2 to the 4। नाउ इट्स गोइंग टू बी बैलेंस, ठीक है। प्लेस अ 2 विद HBr बेटा एंड प्लेस अ 2 विद वाटर ब्रोमाइड वाली इक्वेशन में। इन अ सिमिलर वे यहां वाली इक्वेशन में भी प्लेस अ 2 हियर एंड 2 हियर। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, iodine which is purple vapor, sulfur dioxide as not such observation but it is an acidic gas. Now next reaction, Hi plus H2SO4 again react करेगा, आयोडीन मिलेगा आपको गैस फॉर्म में, सल्फर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, प्लस H2O मिलेगा, ठीक है। नाउ द ऑब्जर्वेशन विद द सल्फर इज अ येलो सॉलिड, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 2 और एक 3, तो 3 अगर मैं यहाँ प्लेस करूं तो 3 से ये बैलेंस नहीं होगा, यहाँ 3 लगाऊं and I place 6 here, तो 6 to the 8 यहाँ 4 लगा, this equation is balanced now, ठीक है। आई रिकमेंड टू मेमोराइज दीज इक्वेशन एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इनको एज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप मेमोराइज कर लीजिएगा। वन मोर लास्ट रिएक्शन which is whenever you have hydrogen iodide reacting with sulfuric acid। हाँ, पहला तो बेसिक रिएक्शन है वो, ऑब्वियसली दैट रिएक्शन टेक प्लेस विद ऑल अदर हेलोजन एल्केन्स एज वेल, लेकिन हैलाइड्स एज वेल, लेकिन ये वाले जो मेन रिएक्शंस हैं ये 3 दैट्स स्पेसिफिकली विद आयोडीन, right? So you'll get yes iodine gas which is the purple vapor plus H2S gas plus H2O। 2, 2 and 3, 4, 4 to 6, चलिए हाँ नहीं 2 to the 4 and no, this is a balanced equation I think, 4 to the 8, yes, clear। And the observation of this is a gas with a very bad egg smell, बहुत बुरी स्मेल होती है इस गैस की, ठीक है, क्लियर। देखिए इन एंटायर periodicity group 2 group 7 I think these are the few reactions that required a bit more time कि आप इसे अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि जस्ट रिकॉल इट। इसकी ऑब्जर्वेशंस बताओ जल्दी जल्दी, क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। हाँ, द फर्स्ट वन इज अ पर्पल वेपर, गुड, हम लिख लेते हैं पर्पल वेपर, and purple vapor is because of iodine in a vapor form, and then you have a yellow solid, and yellow solid is because of sulfur solid। bad egg smell, इसे फाउल स्मेल भी कहा जाता है, अ वेरी बैड स्मेल, ठीक है। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस विद द ब्रोमाइड, सॉरी आयोडाइड आयन, ठीक है, क्लियर। मेक योर समरी नोट्स अच्छे तरीके से, एक जगह पर इन्हें लिखें कि क्लोराइड के साथ ओनली मिस्टी फ्यूम, ब्रोमाइड के साथ आपके पास रेडिश ब्राउन वेपर थे, एंड विद आयोडाइड यू हैव अ पर्पल वेपर, येलो सॉलिड एंड बैड एग स्मेल, ठीक है। इफ दे आस्क यू व्हाई iodide is giving these 3 observations, so the answer is because iodide is the strongest reducing agent, ठीक है। so it sulfuric acid को इसने reduce करके
+6 से +4 में पहुंचाया, ना सिर्फ ये कि +4 में +0 में भी पहुंचाया, 0 में भी नहीं बल्कि -2 तक लेकर गया, ठीक है ना, तो घर तक पहुंचा कर आया। दैट्स हाउ नॉर्मली द आयोडाइड इज डूइंग, ठीक है, क्लियर? सो शैल आई मूव फॉरवर्ड? इज इट क्लियर बेटा? So I started with, I gave you an idea of oxidizing power, and then देखिए ये basic, the first reaction is all is 100% same for all these halide, ये तो सबका सेम है, ठीक है। बाकी रिएक्शंस को आप गौर से देखेंगे तो ये वाला रिएक्शन ब्रोमाइड में और आयोडाइड में बिल्कुल एक जैसा है, देख लीजिए। नाउ इट्स बोथ आर ऑन द स्क्रीन, Br2 है और यहाँ लास्ट लाइन में देखिए I2 है, साथ में SO2 है, SO2 है, 2H2 है, 2H2, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शंस, इफ इनफैक्ट नाउ इफ यू कैन सी द रिएक्शन ऑन द टॉप, एंड ये दोनों ग्रीन वाले रिएक्शन एक जैसे हैं बिल्कुल, देखिए सिर्फ ब्रोमाइड की जगह मैंने आयोडाइड लिखा है, ठीक है। एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ Br की जगह I नेगेटिव लिखा है, क्लियर? सो द एडिशनल रिएक्शन जो आयोडाइड के केस में आपको मेमोराइज करने हैं वो ओनली दीज टू रिएक्शन, इनकी भी सिर्फ बैलेंसिंग डिफरेंट है, आप देखिए। नहीं, whenever they ask you, they might ask you with the observation. They ask you when sodium iodide is dissolved in a concentrated sulfuric acid, a yellow solid is formed. ठीक है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस येलो सॉलिड। तो आप पहले वो वाली इक्वेशन लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे I नेगेटिव का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और येलो सॉलिड वाली इक्वेशन इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बस इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन के साथ आपसे पूछेंगे, और इट्स क्वाइट सिंपल। लेट्स सी one thing and then we'll move forward. Okay, inorganic. No, I have to download it. Chal, let's move forward towards another important reaction. We have done this type of reaction in our redox reaction. हाँ भाई, disproportionation reactions are the type of reaction in which a single element is getting oxidized and reduced simultaneously. Taken in a normal redox reaction, one element is getting oxidized, the other element is getting reduced. But in a disproportionation reaction,
एक ही सिंगल एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा होता है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। अ टाइप ऑफ redox reaction in which a single element getting oxidized and reduced simultaneously. Okay, so this is a type of reaction in which a single element is getting oxidized and reduced simultaneously. और वही example लेंगे जो हमने redox में लिखी थी, the reaction of chlorine with cold sodium hydroxide aqueous. Chlorine reacts with sodium hydroxide at two different conditions. One is around 15 degrees Celsius, which is the cold condition, forming sodium chlorate 1. और एक कंडीशन है जिसमें ये रिएक्ट करता है विद सोडियम क्लोराइड इन हॉट कंडीशन एट 70 डिग्री, जिसमें सोडियम क्लोराइड 2 बनता है। क्लियर? सो राइट डाउन द रिएक्शन फर्स्ट। यू हैव अ क्लोरीन gas that react with sodium hydroxide forming NaCl plus NaClO plus H2O। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको बैलेंस रिएक्शन याद करना पड़ेगा। This is aqueous, this is aqueous, and this is aqueous as well. The oxidation state of chlorine here is 0 because it's an element form. In this one, the oxidation state of chlorine is -1. NaClO में the oxidation state of chlorine is +1. So you can see the chlorine is getting reduced in this particular equation, यहाँ reaction में, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? Reduce हो रहा है, and in this one it is getting oxidized. यहाँ से यहाँ तक में it is getting oxidized. ठीक है? So yes, the chlorine getting oxidized and reduced simultaneously in a single chemical reaction, then this is called a disproportionation reaction. NaClO को हम कहते हैं this is sodium chlorate, और आप ब्रैकेट में 1 लिखते हैं just to show that the oxidation state of chlorine is +1. So this is called sodium chlorate 1, NaClO. Clear? Can I ask you to write down the ionic equation for this one? Exam में पूछी जाती है बेटा. So ionic equation for this particular reaction. Na positive is a spectator ion, से Na cancel out हो जाएगा. ठीक है? Clear? ऊपर वाली equation को balance नहीं किया हमने. We can see 2 sodium. So if I place 2 here, this equation is balanced. NaOH के साथ 2 लगा दीजिए बेटा. क्लियर? तो 2Na कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आयनिक इक्वेशन बनेगी दैट्स गोइंग टू बी Cl2 गैस प्लस 2OH नेगेटिव एक्वस. दे आस्क दिस आयनिक इक्वेशन एज वेल. ठीक है? फॉर्मिंग Cl नेगेटिव एक्वस प्लस ClO नेगेटिव एक्वस. Na पॉजिटिव हटा तो नेगेटिव साइन आया प्लस H2O. ठीक है? This is basically the ionic equation of the reaction of chlorine with the with sodium hydroxide at 15 degree Celsius. ठीक है? Sorry, let's copy it down. Same reaction takes place. Instead of chlorate 1, chlorate 5 will form, जिसको हम NaClO3 कहते हैं. और ये क्लोरेट्स का कॉन्सेप्ट redox reaction वाले चैप्टर में बहुत पूछा गया. They ask you to calculate the oxidation state of chlorine in chlorate 1 and chlorate 5.
when the chlorine reacts with sodium hydroxide at 70 degrees Celsius. ठीक है, so the B part लिखिए, reaction of chlorine with hot sodium hydroxide aqueous at 70 degrees Celsius. ठीक है, at 70 degrees Celsius. Now we have a chlorate 5 will form. So the reaction is Cl2 gas plus NaOH. Same reaction, NaCl बनेगा बेटा plus NaClO3 बनेगा plus H2O बनेगा. ठीक है, now this is the balanced chemical equation. This is called sodium chlorate 5. Sodium chlorate 5. ठीक है, so the oxidation state of chlorine is +5 in sodium chlorate. चाहे तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए. NaClO3 में the oxidation state of chlorine is +5. Again the chlorine is getting oxidized and reduced simultaneously, है ना. यहाँ पे chlorine की oxidation state कितनी है? 0. यहाँ oxidation state -1 और यहाँ oxidation state +5. तो chlorine is getting oxidized and chlorine is getting reduced. So this is another example of a disproportionation reaction. इसकी ionic equation बनाइए जनाब. So the ionic equation is 3Cl2 gas plus NaOH के साथ भी कोई नंबर लगाना चाहिए हमें. NaOH के साथ 6 लगाना चाहिए, है ना. plus 6OH negative aqueous forming 5Cl negative aqueous plus ClO3 negative plus 3H2O. All these are the aqueous sign. ठीक है, सिर्फ हमेशा मेटल आइंस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल आइंस आर बेसिकली द स्पेक्टेटर आइन. तो एक सोडियम हटाओगे तो -1 चार्ज आएगा. इफ इट वुड बी 2 सोडियम तो -2 का चार्ज आएगा. ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल्स आर मोस्टली द स्पेक्टेटर आइन. तो Na पॉजिटिव हटा तो OH नेगेटिव आ गया, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहा. ठीक है बेटा. So as I said, these two reactions are very important. इससे पहले वाला reaction of halide ion with a concentrated sulfuric acid and the reaction of chlorine with sodium hydroxide at two different temperature, which is a good example of a disproportionation reaction. We are nearly at the end of this topic. As we can see, हमारे पास till here it was totally around O levels वाली चीजें थी सारी, है ना. इससे पहले हमने सारी stability of halides और ये सारी चीजें. This is about O levels. And from today's lecture, yes, these are the few reaction and these are the reaction from A levels. So make sure कि आप इन reaction को अच्छे तरीके से memorize करें. Important reaction है with a good examination weightage. The weightage of inorganic section, which is periodicity group 2, group 7. which में group 2 में तो कुछ भी नहीं है. हमने देखा एक क्लास में हमने वाइंड अप किया. Periodicity of group 7 से मिलके the overall weightage is around 30%. ठीक है, तो 20 to 30% weightage है. इट मींस दैट आपके एक ग्रेड आपका इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें. देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड कि इफ यू हैव टू मेमोराइज लाइक 5 इक्वेशंस, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. Yes, we memorize it, we keep forgetting it. भूलते जाएंगे, फिर रिवाइज करते रहेंगे, फिर भूलते रहेंगे, फिर रिवाइज करते रहेंगे. While keep doing the past paper, वो अल्टीमेटली याद हो जाएगी. Compare it with a stuff which is very difficult. एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ.
ठीक है, उसके कंपैरिजन में यू हैव टू मेमोराइज 5 इक्वेशंस, बैलेंस्ड इक्वेशन। कौन सा काम ज्यादा आसान है? मेमोराइज करना ज्यादा आसान है ना। तो दिस इज अ मेमोराइजिंग स्टेप। जो कुछ पढ़ा है एज इट इज पूछा जाएगा। अभी हम पास पेपर करेंगे, हमने कुछ periodicity के क्वेश्चन देखे थे, तो यू कैन सी whatever we are studying here, they asking it straightforward, observation based normal question पूछ रहा है। क्लियर? So let's wind it up with the uses of halogens. वैसे तो हेलोजेंस के बहुत सारे यूजेस हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वरना we know that the iodine is used as an antiseptic, bromine as a fire extinguisher, but we are talking about the chlorination of water only. So yes, chlorine is basically a bleaching agent, plus chlorine is an acidic gas. When you dissolve chlorine in a water, it is used to kill bacteria. ठीक है, तो ये वाटर में जाता है एंटीबैक्टीरियल। क्लोरीन इज एंटीबैक्टीरियल। ठीक है, क्लियर? It will form HCl plus HClO. This is aqueous and this is aqueous. ये जो बना है हाइड्रोजन क्लोरेट, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोरेट 1। ये वही रिएक्शन है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता था, है ना, बिल्कुल सेम रिएक्शन। Basically this HClO decompose by UV light and produce reactive oxygen, which kills bacteria. देखिए, वाटर में जो बैक्टीरिया हमारे पास होंगे, दे आर बेसिकली द एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया होंगे? एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, मतलब वो ऑक्सीजन में सरवाइव करते होंगे। तो बेसिकली होता यह है कि दिस HClO decompose by UV light or by the sunlight. ठीक है, produces HCl aqueous plus in a square bracket I'm just writing this oxygen. This is basically called the reactive oxygen. ठीक है, reactive oxygen. So बेचारे बैक्टीरिया जो है वो instead of oxygen they inhale this reactive oxygen that destroy their internal system, और वो this reactive oxygen is basically used to kill bacteria. ठीक है, kills bacteria. So ये बैक्टीरिया का कातिल। Clear? Another use of halogen is as a bleaching agent. Basically, bleaching agent or detergent is a mixture of chlorine with alkali. याद है ना आपको, alkalis का soapy touch होता है, हम कहते हैं alkalis are used to make soaps. So that's how they make soap. आप alkali में chlorine add कर देंगे तो soap के अंदर bleaching quality भी add हो जाएगी, because chlorine is an acidic gas which has a bleaching properties. ठीक है, clear? So आप इसमें chlorine को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करेंगे तो आप पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन क्या होगा, NaClO बनेगा। ठीक है, दिस NaClO is basically the bleaching properties. ठीक है, सोडियम क्लोरेट 1। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली PVC। PVC याद है आपको? यस, पॉलीविनाइल क्लोराइड। And we will do polyvinyl chloride while we do polymers in AS organic alkenes. ठीक है, so yes, this is basically
The last thing, and we're done with this one at group 17. So only a very small section of inorganic is remaining, which is कौन सा रह गया? क्या रह गया inorganic में? Only the organic nitrogen. Sorry, only the nitrogen and sulfur. So nitrogen and sulfur is even less than your O level. We give you general introduction of nitrogen and sulfur, and then a bit of conditions of Haber's in the contact process, and then the uses of ammonia gas and the compounds of ammonia. Okay, so we're just keeping it till here.